Ladies and gentlemen, good day and welcome to Ashapuri Gold Ornament Limited Q2 H1 FY26 Result Conference Call. As a reminder, all participants' line will be in listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Ganesh. Thank you, and over to you, sir. Thank you everyone for joining the conference call of Ashapuri Gold Ornament Limited. From the management team, we have Mr. Jitendra Kumar Soni, Joint Managing Director, and Mr. Jainik Soni, Chief Executive Officer. With that, now I hand over the call to Mr. Jainik Soni. Over to you, sir. Thank you, Ganesh. Good afternoon, everyone, and thank you for joining the Ashapuri Gold Ornament Limited Q2 and H1 FY26 earnings call. This has been a very encouraging quarter for us, both operationally and financially. In Q2, we delivered a strong volume-led growth, expanding our sales quantity by 20% year-on-year, supported by healthy demand across key retail chains and continued acceptance of our design-led offerings to the big box stores across India as well. Total income grew by 18% year-on-year to 102 crores, while EBITDA margin is doubled more than 11.47 crores we have achieved, doubled than the last quarter, resulting in 540 BPS margin expansion to 11%. Our profit after tax increased 145% year-on-year, amounting rupees 8.47 crores. And in the margin terms, it has increased 428 basis points. Overall, reflecting the benefits of scale, product mix, and better operating leverage. Operationally, it has been a defining quarter for us, as we have also booked 102 crores of fresh domestic orders at IIHS 2025. And additionally, we also have secured 5.41 crores orders of our premium line of diamond and polki jewelry collection under our brand name, Aneha. This means strengthened our order visibility and reinforce the trust that all the big retail chains has in Ashapuri Gold. Our focus continues to remain on scaling premium branded product lines, deepening our relationships with national and regional chains, and building a strong design-led manufacturing ecosystem that supports the sustainable and profitable growth of our company. With our strong first half performance and healthy order book on hand, we believe we all are reason to deliver consistent growth in the coming quarters. Now I look forward to addressing your questions and sharing more on our strategic direction. And now I open the floor for question and answers. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Subhanu from CH Capital. Please go ahead. Hello, sir. Am I audible? Yes. Thank you. Sir, according to our presentation, around 30% from big box client. What does this mean, big box client? They are local jewelers? Yes. So we have divided a customer base in two segments. One is corporate chains who have multiple stores across India, and big box clients are single brick and mortar stores which are local players across cities in India. So we call them brick and mortar stores, such as a big box stores. Okay. Can you tell me how much percentage come from going forward? Are you targeting segment?
So currently, we are getting over 35 to 40% of our revenue from big box stores, and through the organizing market of the local junior players also, expecting a sustained growth for them as well. That means growth we can expect around 30 to 40%. Sorry? That means we can expect 30 to 40% from this client. Yeah, From yes. From this segment, we can expect 30 to 40% of our revenue coming from this segment. Yes. Okay. Can you tell me why our EBITDA margin this quarter improved drastically, almost 6% to 11%? Yes. So the margin improvement is largely driven by 2 to 3 factors. First is higher volumes. So as we booked the orders from our IAGS exhibition, we have increased our volume this year. Second is we are focused on better product and premium jewelry collection, which is diamond and polki collection. So through that also our margin has increased. And third is we have very much focused on the designing led innovation in our designs, through which we can have an edge for the margin. One more factor is this quarter, gold price is also one of factor. Yes. Okay. How much percentage of the gold we are hedging? Hedging? You are asking about hedging? Yeah. How much inventory we are hedging? So we are hedging yes. almost 100% hedge. Whatever sales booked by a company in each every transaction on fixed sales, fixed rate cut type of rate cut, we are hedging all 100% against the fixed rate cut. Okay. Can you tell me what is our weighted average inventory cost? What, sir? What is our weighted average inventory cost according to current gold price scenario? Don't understand your question. सर मैं बोल रहा हूँ कि हमारा इन्वेंटरी कॉस्ट अभी कितना पर ग्राम कितना है हमारा इन्वेंटरी पर ग्राम इन्वेंटरी कॉस्ट हाँ इन्वेंटरी कॉस्ट अभी हमारा एवरेज कितना है मेकिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं सर नहीं इन्वेंटरी गोल्ड का जो इन्वेंटरी है ना हमारे पास हमारा गोल्ड का इन्वेंटरी का एवरेज कॉस्ट स्टॉक का वैल्यू कितना है वैसा बोल रहे हो या स्टॉक वैल्यू सर मुझे देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्लोजिंग स्टॉक Q2 में देखना पड़ेगा मुझे इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल गुड्स में है वो मैं आपको देख के बताता हूँ चलो ठीक है और एवरेज कितना प्राइस में है एवरेज प्राइस एवरेज कितना प्राइस में अच्छा ओके गोल्ड स्टॉक का एवरेज प्राइस वो भी सर मुझे देखना ही पड़ेगा एवरेज प्राइस क्या है अभी Okay. Can you tell me our FY26 guidance and what margin we can expect? Yeah, Janik? Yes. So for the FY26 guidance, at the starting of the year, we were bullish on the revenue of 45 to 50% of the revenue growth. But in Q1 and Q2, as we have seen, the gold price has risen to over 40 to 50% in just last 6 months. Through that gold price also, हमने 20% का margin तो revenue sustain किया हुआ है. But 26 का guidance हम लोग ऐसा expect कर रहे हैं कि 20 to 25% पे हम लोग grow करेंगे इस साल. और जो हमारा टारगेट था 45 to 50% अचीव करने में हमको 6 to 8 months और ज्यादा लग सकते हैं. ओके दैट मीन हमारा गाइडेंस घट गया ना नहीं ये गोल्ड प्राइस जो 40% बढ़ा ना वो प्राइस बढ़ने के बाद भी हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी में भी हम लोगों का ग्रोथ अच्छा हुआ है 20%. तो ओवरऑल जो स्टार्टिंग में जो अपना विजन था कि भाई 45 to 50% हम ग्रोथ करेंगे वहां पे ये गोल्ड प्राइस का 40% का जो मूवमेंट अपसाइड हो गया विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम
तो वो डिस्काउंटिंग करेंगे तो वो डिस्काउंटिंग हम कैलकुलेट करके चल रहे हैं. Right. Okay. 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 Thank you. Thank you. And best of luck. जी. Thank you. A reminder to all the participants that you may press star and one to ask a question. The next question is from the line of Mr. Arvind Jadhav, an individual investor. Please go ahead. Hello. Sir? Hello. Yes, you're audible. Am I audible? Hello. Yes, sir. You're audible, yes. Okay. For the year FY26, what is the volume growth target, sir? Compared to last whole year, we are now expecting 20% growth for whole year 20% in terms of volume kgs. So, by end of FY26, how much kg we are expecting volume in kg? तो लास्ट ईयर का जो डेटा है, जो भी पूरे साल का आई थिंक सो 440 केजी होगा, वहां से अब 20% का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. That means 528 kg. यस सर. Yeah, because so much of bullishness in the gold market is there, and other companies are doing very much well. So why can't हम लोग ये हमारा वॉल्यूम बढ़ा क्यों नहीं सकते हैं, मतलब बिकॉज स्काई गोल्ड या उत्सव या शांति इन लोग को बहुत काफी ज्यादा आ रहा है, तो हम लोग का प्रोडक्ट डिफरेंस है ना सर. प्रोडक्ट डिफरेंस हमारा जो प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्ट का जो मेकिंग साइकिल है हमारा, वो जो ज्यादा है अभी, रेदर देन उनका जो प्रोडक्ट का जो डिफरेंशिएट है कि स्मॉल प्रोडक्ट, कास्टिंग प्रोडक्ट, दे आर प्रोड्यूस कास्टिंग एंड चेन प्रोडक्ट, तो उनमें ज्यादा टर्नओवर हो जाता है कंपेयर टू अवर एंटीक प्रोडक्ट. ये पूरा डिजाइनिंग और वेडिंग सेगमेंट है हमारा, तो उसमें प्रोडक्शन साइकिल ही थोड़ा बड़ा है. अच्छा. और उसमें कंपैरिजन करेंगे तो जो चेन एंड कास्टिंग प्रोडक्ट का जो मार्जिन रहता है, वहां से यहाँ का प्रीमियम सेगमेंट में डील कर रहे हैं, तो हमारा मार्जिन ज्यादा होता है. ओके. तो year end revenue, what could be the revenue target for 26? So revenue target, sir, we are just analyze our data in terms of volume only, kg, because the revenue are purely उसमें प्राइस का जो इम्पैक्ट फिर काउंट हो जाता है, तो हम उसको क्वांटिटी टर्म्स में ही हमारा एनालाइज होता है, और क्वांटिटी टर्म्स ही बेटर रहता है. तो हम क्वांटिटी टर्म्स में जैसे आपको बोला कि हम 20% का ग्रोथ 100% अचीव कर पाएंगे. And for 27, what could be the volume growth target? What? For 27? For FY27, no, sir, we are now just looking for this year only. Right. So Our focus is there is no clarity on FY27 revenue volume growth target. No, क्लैरिटी की बात नहीं है. क्लैरिटी तो मैं अभी भी आपको बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं. जैसे अभी हमारा जो 100% जो फोकस है कि इस साल में हम क्या नंबर अचीव करेंगे. Right. Yes, sir. So out of 528, what you are mentioning the target for 520 for FY26. So up till now, how much kg total in Q1 Q2 was there? टोटल हुआ है अभी 217 kg. 270 means 40% of the yearly target you have achieved till now, and Yes, sir. in the second half it will be 60%, right? Yes, sir. Yes. So, Yeah. Thank you. That's it from my side. Thank you. Okay. Thank you. The next question is from the line of Mr. Pratham Shah from Each Stock Mantra. Please go ahead.
Mr. Pratham, we have unmuted your lines. Please ask your question. Hello. You are audible. Hello. Yes. You are audible. Am I audible? Yes, yes. Yes. Thank you. So my first question is, can you elaborate on key demand drivers behind 20% year-on-year growth in sales volume? How sustainable you believe this in momentum across the region? Yes, because we believe that this trajectory is sustainable because the demand is broad-based across national jewelry retail chains plus regional jewelry chains which we have different brands to cater to them. And again, we are focusing also on our premium collection categories. So I think this will be very much sustainable that we will be able to deliver 20% growth this year. Okay. But what trends are you seeing at retailer level in terms of sales through your designs, and how does that influence your demand forecasting upcoming quarters? What trends you are asking? Asking what trends are you seeing at a retailer level in terms of Okay. your through designs, and how do you influence your demand forecasting upcoming quarters? So there are 2 to 3 different trends I am able to see right now. So because of the rising gold prices, still the people are focusing on the lighter weight jewelry, and clients are also focusing on reducing the caratage also. So we are also working on the capsule collections of 18 karat jewelry and 14 karat jewelry also in diamond and polki collections. So these 2 trends I'm seeing in the market which can take place. Okay. Yeah. In your strong response at IIJ 2025, what insight do you gather on changing consumer desires across North, West, or South India? You are taking, sir. Can you repeat? Sorry? Okay. Can So you? given your strong response at IIJS 2025, Yeah. what insight have you gathered on changing consumer design preference across North, West, or South India? So we are exploring various collections and various different types of trends across India because it's very much cultural specific states across north, south, east, and west. So still south and north are having a strong demand base, and we are focusing on plain type of jewelry collection. We are focusing on precious stones type of a jewelry collection. We are focusing on casting based machine type of jewelry, and yet again bridal concept as well. So we are trying to get all the cultural areas covered through different capsules by culturally based research developed collections. Okay, okay. And could you share more color? Could you shed more color on current order book visibility beyond 102 CR from orders from IF and sorry, let me repeat my question. There is sound a little bit around me. So could you please share more color on current order book visibility beyond 102 CR orders and 5.41 CR orders from NAM, particularly in the pipeline and inquiry levels? Yes, 100%. We are currently in talks with two national chains for the orders to confirm. And in January, IIJ's signature new exhibition is also coming. We are preparing for that in a huge segment. So we will expect order book to rise and can confirm in quarter 3 and quarter 4 as well. You can see the numbers. Okay, okay, fine. I will get back into queue for this. I will come back after some time. Thank you. A reminder to all the participants that you may press star and 1 to ask a question. The next question is from the line of Mr. Vinod Shah from VS Venture. Please go ahead. Hello. Good afternoon, sir. Am I audible? Yes. Yes.
You are audible. Yeah, sir. So can you share on the traction you're seeing in the Anaya collection, and what is the share of polki and diamond jewelry in your current order pipeline? So the share of this Anaya collection is less than 5% now. It's just like a new baby we are launching and trying. Our major forte is into antique gold jewelry only. So yes, but we are seeing a good response in that. This collections is for national chains. We are still getting 2 to 3 different projects to work on, and we can hopefully see the numbers in next quarter. Oh, okay. And so can you walk us through a key drivers, like which type of categories are driving our order book? So, for example, you need different types of jewelry brands. Yes, yes. Jewelry brands and any categories. Like, what is driving our order book? That's what I want to know. So there are various points which are driving our order book. Is like we have a deep design ecosystem. We have 17,000 plus design library. We have strong speed to market cycle execution. We are again having various types of jewelry all in one solution to the national jewelry retail chains. We are one of the largest organized jewelry manufacturer in India who can supply huge amount of quantity to the national jewelry chains. So, trusted by all the big retail giants. These all are the driving forces of our order book. Okay. And sir, our Yes. current utilization level is what, 90% plus, right? 93. Yes, sir. Yes. So, like, how are we planning to support our incremental orders? So, as I mentioned before also, that हमारे पास फैक्ट्री जो फैक्ट्री यूनिट है वहाँ पे हमारे पास ओवर 1.5 टन का प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपांड करने का स्पेस हमने लैंड एक्वायर करके रखा हुआ है. सो जब हमारे पास अगर ऑर्डर फ्लो इनफ्लो होता है तो हमको सिर्फ 40 to 60 डेज चाहिए हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपांड करने के लिए. तो थ्रू दैट हम लोग वो डिमांड को मीट कर सकते हैं. ओके. एंड इसमें कुछ हम आउटसोर्सिंग वगैरह प्लान कर रहे हैं? कुछ है सर, मतलब टेम्पररी अगर कुछ है? सो अगर ऐसा कुछ होता है तो वी कैन एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज, बट करेंटली वी आर वेरी मच सेल्फ सफिशिएंट टू फुलफिल द ऑर्डर्स. और अभी कुछ न्यू प्रोडक्ट्स अगर लॉन्च कर रहे हैं तो लाइक हाउ मेनी ऑफ देम? आई डिडंट गेट द क्वेश्चन. हाँ, मतलब आर यू प्लानिंग टू लॉन्च एनी न्यू प्रोडक्ट एंड लाइक व्हाट्स द स्टेज? Yeah. So the capsule collections, yes, every 2 months we launch our capsule collections for our clients. Okay, okay. ठीक है, that's Yeah. all. Thank you. Yeah. Yeah. Thank you. The next question is from the line of Miss Anjana from Orient Capital. Please go ahead. Yeah. So, thank you for this great opportunity. So my first question would be, like, how should we think about the margin trajectory for H2 FY26 and FY27, especially considering your premiumization efforts? So for the margin, I feel that we have focused on our increasing in margin, और जो आपने Q2 में उसका impact देखा भी है. So our focus is also on improving product mix, scaling branded segments, which will structurally support margin. And again, we aim to maintain stable margin with gradual upward bias, supported by manufacturing efficiency and volume of orders from the national chains. Okay. Okay. So, like, my second question would be, like, with 18,000 plus designs and multiple branded collections, what will be your focus areas for new launches in FY26 and 27? And how do you identify trends? What is my focus for? Focus areas for new launches in FY26 and 27, and how do you identify trends? So
So being at the base level in the industry, we are very much well connected with all the good big clients in across India. Through that, we can identify our trends. Plus, we have our research team as well, who do constant R&D on what's coming and going into the market. So through that, we are able to identify the trends. And for the areas to launch, still, uh, it's always like a melting pot of different cultures in India. So I feel the basic north and south demand are still strong, but surprisingly, I also see west is also growing. So we can try launching a collection for west as well. Okay. So thank you for answering that. I have one more last question. So could you discuss how region-specific collections have contributed to growth and what the next phase of product localization will look like? So cultural specific collections are still in the pipelines. I have not received the right numbers as of now about how it's doing, but hopefully I can get in next 2 to 3 months. Okay. Yeah, sir. That's all from my side. Thank you for answering my questions. Thank you. Thank you so much. Thank you. A reminder to all the participants that you may press star and one to ask a question. Next question is from the line of Subhanu from CH Capital. Please go ahead. Hello. Thank you for opportunity. Can you hear me? Yes, I can hear you. Sir, one clarification question from my side. Please clarify me if I'm wrong. 18 carat have higher margin than 22 carat plain gold jewelry? प्लेन गोल्ड ज्वेलरी कंपेयर टू 22 कैरेट और 18 कैरेट का जो मार्जिन का डिफरेंस है मे बी वो हायर हो सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है मार्जिन में इन टर्म्स ऑफ प्लेन गोल्ड ज्वेलरी. बट वही अपन स्टडेड में जाएंगे तो उसमें मार्जिन साइड थोड़ा बढ़ जाएगा कंपेयर टू 22 कैरेट इन 18 कैरेट. मतलब 18 कैरेट में 22 कैरेट प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में स्टार्टेड में दोनों से भी ज्यादा मार्जिन है. प्लेन से ज्यादा मार्जिन है स्टडेड में. I understand that, but 18 कैरेट में क्या प्लेन गोल्ड से ज्यादा मार्जिन है? Yes, 100%. Okay. Sir, what is our current capacity and future guidance on capacity expansion? Yanik. So current capacity we have increased 250 kgs from 500, so 750 kgs का हमारा current capacity है, and we are sufficient to fulfill the orders for the current time. अगर हमारे पास कुछ अगर ऑर्डर्स आगे हम लोग डिमांड आता है तो हम उसको और इंक्रीज कर सकते हैं, आगे 1 टन तक इंक्रीज कर सकते हैं. Okay. ठीक है. My last question is what is our jewelry mix? What is our jewelry mix? Started jewelry mix. So we are doing 95% of the studded jewelry concept right now. We are into the wedding studded category only. Sorry, I asking regarding diamond jewelry sale. Percentage, in terms of percentage, what percentage of revenue come from studded jewelry? Diamond jewelry. Diamond, okay. Diamond and post collection is around 5%, under 5% of the revenue. We are just launched 6 months back, the diamond jewelry collection. Okay, close to 5% revenue comes from diamond jewelry. Yes. Okay, thank you. Sorry, sir. My last question. Another question. I have another question. हमारा वॉल्यूम ग्रोथ क्या 22% है, बट रेवेन्यू ग्रोथ कितना है? Yanik. Revenue growth quarter on quarter?
नहीं, फुल ईयर का FY26 का हमारा वॉल्यूम ग्रोथ है 20 to 22%, और रेवेन्यू ग्रोथ कितना है हमारा? Revenue growth रेवेन्यू ग्रोथ का 18%. सॉरी, एज ऑफ नाउ हाफ ईयरली में 18% का ग्रोथ है. नहीं सर, गाइडेंस रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस कितना है हमारा FY26 का? हमारा तो वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस 20 to 22% है. वो हमने जैसे मैंने आपको बोला ना कि भी हम लोग पूरा एनालाइज क्वांटिटी बेस पे करते हैं. ओके. हाँ, तो क्वांटिटी का तो मैंने गाइडेंस दिया कि लास्ट ईयर का जो पूरा साल का जो क्वांटिटी था 440 kgs, तो उससे हम लोग अभी एक्सपेक्टेशन हमारा इस साल का 20% ग्रोथ पे है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अचीव कर पाएंगे. ये क्वांटिटी भी की बात कर रहा हूँ मैं, वॉल्यूम की. बट नॉर्मली ये तो ज्यादा होता है ना, वैल्यू अकॉर्डिंग पीसी अकॉर्डिंग वैल्यू, बट वैल्यू ग्रोथ नॉर्मली वॉल्यूम ग्रोथ से ज्यादा ही होता है. हाँ, तो वो यहाँ इसीलिए मतलब ये क्वांटिटी हम लोग इसीलिए क्वांटिटी फोकस रहता है ना. ये वॉल्यूम का तो क्या प्राइस का इम्पैक्ट आ जाता है वॉल्यूम पे कहीं ना कहीं. इसीलिए हम लोग एनालाइज और जो भी डेटा शेयरिंग करते हैं टू अवर इन्वेस्टर और शेयर होल्डर, वहाँ पे क्वांटिटी की बात करते हैं और मैनेजमेंट भी क्वांटिटी के ही जनरली सराउंडिंग डिस्कशन रहता है. टारगेट भी और एक्सपेक्टेशन भी वही का रहता है क्वांटिटी का. ओके. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक. जी. Thank you. A reminder to all the participants that you may press star and one to ask a question. The next question is from the line of Siddharth Jain, an individual investor. Please go ahead. Yeah, thank you for the opportunity. So, sir, I have some questions. So my first question is, our manufacturing volume grew 45%. So, what specific internal process improvements enabled this scale up? ऑफ कोर्स, जैसे लास्ट टाइम जो 93% का यूटिलाइज हो चुका है ना, तो हम लोगों ने जो नया फ्लोर भी इस साल ओपन किया है, नए कारीगर्स भी एड ऑन किए हैं, उसी का ये सब भी है कि भी मैन्युफैक्चरिंग भी और बढ़ा हुआ है. Okay. And sir, you operate at around 93% capacity utilization. So, how are you planning for capacity expansion, automation or? No, सर. इसमें आपको ऐसा है कि हमारा जो प्रीमाइसिस है मैन्युफैक्चरिंग, वो 1.5 टन की कैपेसिटी का ऑलरेडी हमारे पास जगह है, 1.5 टन अ ईयर. उसमें हम लोगों का 3 फ्लोर्स है अलग अलग. उसमें हम लोगों ने एक फ्लोर ही 500 kg का हम लोग चला रहे थे लास्ट 2 साल 3 साल से भी. उसका 93% हम लोगों ने अचीव कर लिया है लास्ट ईयर, और इस साल हम लोगों ने एक नया फ्लोर और ऐड किया है टू मीट द जो नया अभी टारगेट है हमारा कि इससे भी ऊपर जाएगा, तो हमने नया फ्लोर उसमें ऐड किया है. अभी भी हमारा एक फ्लोर तो ऐसे ही ओपन ही है. ओवरऑल हमारा जो कैपेसिटी है वो 1.5 टन का है. ये हम उसको फ्लोर वाइज चलते हैं. Okay. Sir, what are your working capital cycle trends in Q2 H1, and how do you see it evolving as you scale premium collections and institutional clients? यस सर, प्रीमियम कलेक्शन तो ऑलरेडी दैनिक कलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. दैनिक. Yes. So for the collections we are launching, working capital cycle should be focused to increase and betterment, because इसमें क्या होता है कि जो कलेक्शंस हम लॉन्च करते हैं उसके हम लोग ऑर्डर साइकिल पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो हमको इन्वेंट्री बनाने में इतना हमारा कैपिटल ब्लॉक नहीं होता होगा. So working cycle capital cycle will obviously increase, we target to focusing on 45 days of working cycle in terms of collections. Okay. Or sir, given this 90-day and 45-day execution timelines for recent orders, how are you ensuring on-time delivery as order volumes continue to rise? Yes, of course. Sure. Danik, please. Yes. So through our very much organized manufacturing capability,
around 60% of the orders of IIJS is already delivered, and remaining you can obviously see in quarter three also. And the diamond collection, same again, 70 to 75% orders is almost released to clients. Okay, okay. Okay, sir, that's it from my side. Thank you for answering all the questions. If I have any questions, I'll join back the queue. Yeah. Thank you. A reminder to all the participants that you may press star and one to ask a question. The next question is from the line of Mr. Pratham Shah from eStock Mantra. Please go ahead. Hello. Yes. Yes, thank you, sir. So I have a couple of questions again. That how is the client mix between national chain, regional retailers, corporate clients evolving, and what's the strategic shift are you planning to deepen this relationship? So currently, around in terms of kgs, I would mention 60 to 65% of the revenue mix is coming from big box corporate clients, and 30 to 35% is coming from big box singular stores. Okay. And to your second part was how I should focus on improving the orders, right? No. How do you plan to shift, deepen this relationship? What you already have. So we have a separate team for the category we defined in terms of national chains, regional chains, and big box. We have separate team for relationship management. तो नेशनल चेंज की टीम हमारी सेल्स टीम पूरी अलग है, जो उनको सिर्फ उन्हीं को कैटर करती है. रीजनल चेन के लिए हमारी टीम अलग है और बिग बॉक्स के लिए भी टीम अलग है. तो हम लोगों ने इंटरनल टीम मैनेजमेंट भी सेपरेट किया हुआ है. तो उनको स्पेसिफिक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए और उनको फोकस रहने के लिए. ओके. तो ये टीम मैनेजमेंट ही हमारा सेपरेट कर लिया है हम लोगों ने, क्योंकि भी उससे क्या है, फोकसिंग ज्यादा हो सकता है क्लाइंट के ऊपर. Okay. And regarding the raw material, how have you, your raw material procurement time, what are your raw material procurement timelines and price volatility impacted production? How does this price volatility? Raw material is very much available because the bullion we have already our ओल्ड वेंडर्स आर इन बुलियन एंड अभी तो हम गिफ्ट सिटी से भी इंपोर्ट करते हैं, एक्सचेंज से भी, और लोकल इंपोर्टर्स, लोकल जो प्लेयर्स है जो बुलियन के. तो रॉ मटेरियल प्रिक्योरमेंट करने के लिए ऐसा कोई चैलेंज नहीं है. ओके, बट हाउ दैट मतलब उसका इफेक्ट कैसे हुआ अपना प्रोडक्शन प्लानिंग पे? अगर आप टाइमलाइन जो है प्रोक्योरमेंट टाइमलाइंस एंड प्राइस वोलेटिलिटी जो इम्पैक्ट किया, अगर प्राइस वोलेटिलिटी एज आई मेंशन सर, हम हेज करके चलते हैं ना. ओके. हम हेज करके चलते तो प्राइस मूवमेंट का हमको वेट करने का जरूरत ही नहीं है ना, समझो. हमने तो हेज कर लिया है. अभी आज मैंने फिक्स सेल कर दिया तो मैंने सामने हेज कर लिया है. अभी मेरे का डेली का जो फंड का मेरा अवेलेबिलिटी है, मुझे तो सिर्फ सामने हेज कर चढ़ा है ना, और मैं मार्केट से डिलीवरी ले रहा हूँ. ओके. और कुछ सप्लाई साइड में कंस्ट्रेंट्स इन सोर्सिंग ऑफ आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स और स्पेसिफिक मटेरियल और प्रीमियम? नो, देयर इज वेरी मच कंफर्ट जोन, बिकॉज के भी इंडस्ट्री में इतने साल से हम काम कर रहे हैं, तो एक रेपुटेशन भी बना हुआ है. तो कारीगर लाने का भी कोई चैलेंज नहीं है, रॉ मटेरियल का भी ऐसा कोई चैलेंज नहीं है. ओके. ठीक है सर, मेरे साइड से इतने ही क्वेश्चन थे. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी. Thank you. The next question is from the line of Mr. Subhanu from CH Capital. Please go ahead. हेलो सर, वन मोर क्वेश्चन सर. हमारा जो 93% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गया 750 kg पर एनम का, इसके हिसाब से है क्या? नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ.
हमारा जो प्रीमाइसिस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइस यूनिट, उसका टोटल कैपेसिटी 1.5 टन का है अरियर। उसमें 3 फ्लोर है जहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। हम लोग जो 500 केजी के 3 फ्लोर है, तो 500 केजी हम लोगों ने फर्स्ट एक ही फ्लोर से लास्ट ईयर तक रन कर रहे थे, तो 500 केजी की कैपेसिटी है वहाँ पे। अभी इस साल का जो नया हम लोग ने टारगेट करके नया फ्लोर भी उसमें ऐड किया है, जो और 500 केजी हमको 500 केजी तक अगर डिमांड आ गया ना, तो भी हम उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उस हिसाब से हमारा पूरा कैलकुलेशन है। मतलब जो 95% यूटिलाइजेशन वो 500 केजी का फर्स्ट फ्लोर का। यस 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 यस। ओके ओके, अंडरस्टैंड, थैंक यू, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर। Thank you. The next question is from the line of Mr. Arvind Jadhav, an individual investor. Please go ahead. सर ये इस साल का जो सेल्स का क्वांटिटी है इन केजीज वो 20% ग्रोथ हुआ है, तो हम लोग FY27-28 के लिए ऐसे कुछ टारगेट रख के चलते हैं या मोर देन 20% या 40% 50% ऐसा कुछ टारगेट हम लेके चल सकते हैं? अभी हमारा पूरा फोकस इस साल का है, तो हम लोग ईयर ऑन ईयर का ही गाइडेंस देते हैं। नहीं, बट हम लोग उसके लिए कुछ अलग से प्लानिंग करते हैं FY27 के लिए। अगर ये साल में अगर 20% ही है, तो अगले साल 30% या 35% वो ऐसा टारगेट करके। देखिए इसमें ऐसा होता है सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे हम लोग अभी जैसे लास्ट कॉनकॉल में भी बोला था कि भाई वी आर अभी नए जो हमने कॉर्पोरेट जो नेशनल चेंज है उसमें हम लोग बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट लिया है उसमें, और जो नया प्लानिंग किया है कि भाई कलेक्शन के थ्रू बल्क ऑर्डर लेने का है, वो स्ट्रेटेजी हमारा बहुत अच्छा रन कर रहा है। तो मे बी वो हेल्प करेगा हमको अगले साल में को इम्प्रूव 20% से 30% और 40%, वो भी पॉजिटिवली ही है हम लोग। लेकिन ऐसा अभी हम उसका कुछ गाइडेंस अभी से नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमारा जो टूवर्ड्स टू फोकस है कि भाई जो नया साइकिल जो है बल्क ऑर्डर का, उसमें हम लोग को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग कॉन्फिडेंस है कि भाई 27 में भी अच्छा ग्रोथ करेंगे। लेकिन उसका गाइडेंस हम अभी दे वो अच्छा नहीं रहेगा, तो हम इसी साल के ऊपर ही फोकस करेंगे। गाइडेंस नहीं, बट उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया ना सर कि भी हम लोग ये पूरा अलग ही स्ट्रेटेजी है। हम लोग लास्ट ईयर तक हम लोग पूरा रेडी टू सेल ही करते थे, जो हमारे पास इन्वेंटरी है उसी को हम सेल करते थे, वही नंबर जनरेट होता था। अभी हमारे पास पूरा एक अलग साइकिल है ये बल्क ऑर्डर का, और उसमें जॉबर का भी एक नया रोल ऐड होगा। तो जैसे समझो कि भी नेशनल प्लेयर से उनके ऑर्डर्स बहुत बड़े होते हैं बल्क में, तो जो बड़े ऑर्डर्स कंप्लीट करने के लिए दे आर गिविंग अस गोल्ड एज वेल। तो वो भी एक अलग से ही उसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। हमारी जो रूटीन जो साइकिल है जो हम मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं टू बिग बॉक्स और रीजनल प्लेयर के लिए, वो इंटैक्ट रहेगा, और ये नया हमको उसमें ये मिलने वाला है। तो ये दोनों ही ये हमारा स्ट्रेटेजी है जो आप का क्वेश्चन है ये। ओके, और हम लोग मतलब लोअर कैरेट गोल्ड में भी जाके वॉल्यूम बढ़ाने का ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी प्लानिंग में है? तो वो पूरा सर देखो वी आर रेडी टू मूव टूवर्ड्स टू लोअर कैरेटेज, बट द मार्केट का इसमें मेन रोल रहेगा। अगर जो नेशनल प्लेयर अगर नेशनल चेंज अगर लोअर कैरेट में जाएंगे तो ही पूरा मार्केट शिफ्ट होगा। और अभी मुझे लग रहा है कि भाई पॉकेट फ्रेंडली होने के लिए गोल्ड प्राइस इतना बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं नेशनल चेन्स भी सोच रहे हैं कि भाई लोअर कैटेगरी का प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, और वहां पे उनको ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरर ही उनको ये डिलीवर कर सकेंगे लोअर कैरेट में। तो हम लोग को तो कोई चैलेंज नहीं है, अगर लोअर कैरेट में भी अगर मार्केट डिमांड शिफ्ट होता है तो वी आर रेडी फॉर दैट। ओके सर, एटलीस्ट हम इतना तो टारगेट कर सकते हैं, दिस ईयर 20% का सेल्स क्वांटिटी है, तो नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट विल मेक 30%, ऐसा कुछ तो आप टारगेट करके चलते हैं, मतलब कैसा? देखिए अभी मैं आपको वही बोला सर कि जो हमारा नया स्ट्रेटेजी है ना, उसमें हमको दिख ही रहा है कि वो हो जाने वाला है।
आप उस तरीके से भी ले सकते हो उसको। Okay. Thank you, sir. Thank you. That's it from my side. Okay. जी सर। Thank you. Ladies and gentlemen, that was the last question for today. I would now like to hand the conference over to Mr. Ganesh for closing remarks. Thank you everyone for joining the conference call of Ashapuri Gold Ornament Limited. If you have any further questions or queries, you can write us at research@kirinadvisors.com. Once again, thank you everyone for joining the conference. Thank you. On behalf of Kirin Advisor Private Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.